Okay, good morning everyone. Welcome back to Crack Grade B. मेरा नाम है ऋषभ. Let's begin today's class for Economics and Finance, Sessions and Analysis. Some tech issues were there. Okay. Now, good morning Nivedita. Welcome to the class. Let's start the class. Okay. Good morning Isha. So, most of the news I will discuss today is not of much importance. ठीक है, ज्यादातर न्यूज ऐसी है जो प्रपोज्ड है. जैसे यही वाली न्यूज है, ये प्रपोज्ड चेंज है और सम अमेंडमेंट्स टू आधार एक्ट. ये क्वेश्चन एक्चुअली में यूपीएससी में एक समय आ चुका है, that where are the where in which places you can use Aadhaar, or who has the authority to have the biometrics on Aadhaar. So earlier only government and the government agencies for the purpose of public welfare, ठीक है, पब्लिक वेलफेयर जैसे बैंकिंग सिस्टम, पीडीएस सिस्टम एक्सेट्रा, दे कैन यूज आधार. ठीक है, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी को लिंक करने के लिए और पैन आधार लिंक करने के लिए. सो ओनली गवर्नमेंट्स and government agencies can use Aadhaar data and Aadhaar biometrics. Now the government is thinking to allow the Aadhaar validation by private entities also. ठीक है. So just let us read it. So the Ministry of Electronics and Information Technology proposed the rules that will allow private entities to carry out Aadhaar authentication for ease of living as well as delivery of benefits and services. ठीक है, proposed rules है ये. ठीक है, proposed rules. Once amendment will be done in Aadhaar Act, then only private entities can use your biometric. उससे पहले तक सिर्फ सरकारी काम के लिए. ठीक. At present, only government ministries and departments are allowed to undertake Aadhaar authentication in interest of good governance, preventing leakages of public fund, because it is also Aadhaar is also used for direct benefit transfer. ठीक है, enablement of innovation and spread of knowledge. Okay. So basically, it is a proposed change where private entities will also be allowed. Okay. They are legally permitted, and the UIDAI is satisfied that the requesting entity is compliant with the standards of privacy and security by regulations. Similarly, private entities who desire to use Aadhaar authentication for good governance purposes will be allowed. Will need to prepare a proposal. Proposal to whom? Proposal to the central government that we want to use Aadhaar authentication, yeah, Aadhaar validation. Okay. And then the central government with the help of UIDAI will check what? If the standards of privacy and security is maintained by that private company or not. ये सब नियम कानून फॉलो होंगे, उसके बाद that private entity will get some green signal. Okay, now the proposed amendments may allow private businesses to carry out Aadhaar authentication for purposes such as usage of digital platform for good governance, prevention of dissipation of social welfare benefits, enablement of innovation and spread of knowledge. In any purpose, जो गवर्नमेंट यूज कर रही है वही काम प्राइवेट भी कर सकता है, once it is allowed by the government. It is a proposed change. होगा नहीं होगा, कब होगा वो देखा जाएगा. ठीक है, proposed by Ministry of Electronics and Information Technology, that you should remember. Good morning Aniket. Good morning. Now the news. New formal job creation in February at a 21-month low. अब ये job creation का data per month आता है. Not very necessary to remember, but still we will look, क्योंकि ये तो these are one of the last months of last financial year. ये data release कौन करता है? EPFO releases it. Formal job data is released by EPFO. How EPFO releases it? जैसे जैसे EPFO के नए account खुलते हैं, so they know about the numbers. Let's see. Just the numbers you should know. So fresh formal jobs creation declined for third straight month in February. ठीक है, third straight month in February. These are the findings from latest payroll data by EPF. Okay, the new monthly subscriber under employees provident fund declined
by 10% sequentially to 7,38,000. Just remember 10% का decline हुआ in February as against January. Lowest numbers joining EPF since May 2020. But just remember that. बहुत ज़्यादा number याद मत रख. So tomorrow I will take a class, Khyati, for revision. Good morning, Renu. Okay, just that. और कुछ भी याद मत करना, इसमें से बहुत ज़्यादा नंबर रहेंगे. Okay, now again, ये तो fortnightly data है, 15 days वाला. So bank credit grows by 15.7% and deposit by 10.2%. Financial year 23 में बैंक क्रेडिट ग्रो हुआ था 15%. पूरे फाइनेंशियल ईयर 23 में 15% से ग्रो हुआ था क्या? बैंक क्रेडिट. नाउ फॉर द फर्स्ट 15 डेज ऑफ न्यू फाइनेंशियल ईयर बैंक क्रेडिट रोज बाय 15.7%. ठीक है, at 138.45 trillion rupees. And also the deposits grew by 10.2%. Again एक mismatch है डिपॉजिट और क्रेडिट में. ठीक है, अब इसके लिए क्या करना पड़ता है? We have seen that SBI is going to launch new bonds. ठीक है, SDFC is going to launch bonds. Banks actually have to raise money somehow. और क्या करेंगे? They can securitize their asset and sell the securitization paper to raise money. तो बहुत कुछ कर सकते हैं, tier 1 bond, tier 2 bond, कई तरह के bonds. ठीक है, because there is a mismatch between deposit and credit. Credits are going higher, deposits are low. How will the bank sustain the business if they don't have money to give credits? ठीक है. So deposit growth 10.2%, credit growth 15.7%. Just remember this. And 15% in financial year 2023 overall. Okay, now this is something important. So NSE issues framework for appointing forensic auditors. ठीक है, let's read it first. National Stock Exchange issued framework for selection of auditor conducting forensic audit of brokers. ठीक है, deep auditing. Now, such forensic audits are done particularly in case of critical violations, including misuse of client asset, unauthorized portfolio management services, etc. Basically, if there is any misuse of money, ठीक है, by portfolio managers, then this forensic audit will be done. अब ये forensic auditors choose कैसे किए जाएंगे? I will talk about it. The stock exchange will define the scope of audit, timelines for completion, invite quotation, and who are empaneled with the market regulator to conduct forensic audit. ठीक है, अब ध्यान से सुन लेंगे. देखो, पहला स्टेज इसका यही रहेगा. The first stage will be to define the scope of audit. Why the audit is going to happen? You have to define it. ठीक है, if there is a problem, there is an issue, or there is a fraud happening, then define the scope of audit. Then second, define the timeline in which that audit will be completed. अब ये केस टू केस बेसिस पे डिफाइन किया जाएगा टाइमलाइन, ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स टाइमलाइन है. ओके, नाउ इनवाइट कोटेशन फ्रॉम ऑडिटर. अब कोटेशन देने के लिए कितना टाइम मिलेगा? लेट्स सी दिस. Okay, Vinay, I think sir has told quite clearly that if not all, around 60-70% of the PDF will be available in downloadable format. ठीक है. Okay, now invite quotation from auditor. अब ये quotation, how much time will be given for quotation? So 5 days. 5 days time will be given to give the quotation. Quotation मतलब अपना pricing etc. the auditors can give. After 5 days, when the quotations arrive to the National Stock Exchange, what NSE will do is NSE will select the 3 lowest quotation. जो 3 सबसे सस्ते quotation होंगे, जो सबसे कम प्राइस डाले होंगे, उसको सिलेक्ट करेगा. Then it will circulate the lowest among them to the other. ठीक है, 3 सेलेक्ट करेगा लोएस्ट, उसमें जिसका सबसे कम कोटेशन होगा उसके कोटेशन को बाकी 2 में सर्कुलेट करेगा. ठीक, if any among the other 2 says that okay, we will give prices even lower than this, then well and done, they will be given the audit. If not, then the lowest quotation will win.
whoever will give lowest quotation for the forensic audit will win and then they can do the audit. ठीक है, ठीक है, सिंपल सी बात ये, 3 ऑडिटर सिलेक्ट किए जाएंगे जो लोएस्ट कोटेशन देंगे, उसमें से भी जिसका सबसे कम होगा ही शी विल बी सिलेक्टेड. ओके, सो दिस इज इट. और ये 5 डेज का होगा कोटेशन पीरियड. कोटेशन देने के लिए आपको 5 दिन मिलेंगे. ओके, simply whoever will bid lowest, that person will get the auditing contract. Simple, no rocket science. Okay, now Russia, now the largest oil exporter to India. ये बहुत दिन से चल रहा है. मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देखा जाए तो पिछले 4 महीने से फॉर द लास्ट 4 months रशिया इज द लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर इन इंडिया फॉर द लास्ट 3 months. Okay, so Russia is the was the largest exporter of crude to India by value in February in spite of Western sanction of $60 per barrel. बहुत दिन तक ये खुशी चलेगी नहीं because the cost of crude has increased because OPEC Plus has stopped the production, lowered the production. Supply कम कर रहे हैं, price बढ़ेगा, $60 per barrel पार होगा. Unless until there is a system that you can bypass dollar trade, तभी आप खरीद पाएंगे, else you will have to buy from any other sources. Okay. Now, crude imports from Russia in February stood at $3.35 billion. $3.35 billion in February only. ठीक है, followed by Saudi and then Iraq. Overall अगर देखा जाए for financial year 23 from April to February, क्योंकि February तक का डेटा है, April to February, then Iraq was our largest exporter of crude oil. इराक ने कितना किया? $30 billion by value and Russia $27 billion by value. रशिया से हमने बहुत लेट खरीदना भी शुरू किया from नवंबर. ठीक है, that's why Russia is far behind, but still. तो अब अगर हम पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करेंगे अप टू February, then Iraq is number 1. अगर हम मंथ ऑन मंथ बेसिस की बात करेंगे then Russia is the number 1 exporter of crude oil. ठीक है, just remember that, और कुछ भी याद नहीं रखना उसको. Now, these are MPC members caution against over tightening. ये actually में these are MPC minutes that are released 14 days after meeting होती है, उससे related है. ठीक है, so members of Reserve Bank of India have cautioned against excessive tightening of interest rate, warning that it could lead to unexpected sharp slowdown in economic growth and may prompt sudden reversal in rate action. ठीक है, so that's why RBI did not, and also because inflation has come down to 6% or below 6%. तो अच्छा ही हुआ कि रेट नहीं बढ़ाया, because क्रेडिट का रेट बढ़ जाता, क्रेडिट का रेट बढ़ेगा तो many projects will become unviable. क्रेडिट लेना मतलब लोन्स लेना unviable हो जाएगा for the corporates और MSMEs, not for corporates also, MSMEs और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट. क्योंकि अगर कॉस्ट बढ़ती रहेगी, बार बार EMIs बढ़ती रहेगी लोगों की, तो पीपल विल नॉट टेक लोन्स, तो ग्रोथ विल बी सबसाइड, growth will be low, and if the growth will be low then the RBI will be pushed to lower the interest rate. ठीक है, तो बार बार बढ़ाना घटाना करेंगे तो ना इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा ना ग्रोथ मोमेंटम पकड़ेगी, so it will be a loss for the country. So that's why they were against the interest rate hike in this MPC meeting. So let's see what they have to say. So in current situation, so Jayant Verma, one of the MPC members appointed by the government. So high inflation, monetary policy does not have the luxury of responding to these growth headwinds. ठीक है, in the current situation. In fact, it's almost axiomatic that monetary action can cool inflation only by suppressing demand. However, policymakers must be vigilant against overshooting the terminal policy rate. So basically, he's saying only the monetary policy is not helpful. ठीक है, कि सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी एक्शन करेंगे डिमांड कम हो जाएगी एंड दैट विल कॉज रिडक्शन इन इन्फ्लेशन is not sufficient. ठीक है, this argument is not sufficient. Okay, now the policy maker, ठीक है, so the policy maker must be vigilant against overshooting of terminal policy rate. Overshooting means overshoot इतना ज्यादा हो जाए, इतना ज्यादा बढ़ जाए policy interest rate that it causes a domino effect
दैट द क्रेडिट डिस्पर्सल जो भी 15% से बढ़ रहा है, 15.7 16% से बढ़ रहा है, वो अपना कम होने लगे. इफ द क्रेडिट issued will go down, then it will hamper the growth. तो हमें अपना कंट्रोल करना है क्या? Our interest rate. Point number one. Okay, now Ashima Goel. Now this MPC member is never for the price rise or the interest rate rise. So earlier this month, RBI kept repo rate steady at 6.5%. ठीक है? So she said that there is no logic for overshooting policy rates and then cutting the interest rate because the growth was hampered. So it is better that you should stop or pause the increase in interest rate and see that the previous जो हमने previous interest rate increase किया है उसका कोई असर हो भी रहा है या नहीं. If the effect of monetary policy tightening is happening in the economy or not, because monetary policy tightening का effect can be shown in economy with a lag. lag कितना लगभग 2 या 3 महीने लगते हैं एक मॉनेटरी पॉलिसी को पूरी तरह से ट्रांसमिट होने में. ठीक है, एंड टू सी वेदर द इंटरेस्ट रेट हाइक्स have worked or not. So it was good because our inflation has fallen below 6%. Okay, the relation between expected rupee depreciation and interest rate is weak. Many tools are available to reduce excess volatility in the exchange rate. ठीक है, तो रिलेशन बिटवीन एक्सपेक्टेड रूपी डिप्रिसिएशन, अब ये बात हो रही है फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड कि अगर रूपी एक्सपेक्टेड है कि डिप्रिशिएट करेगा, मींस द डिमांड ऑफ रूपी विल फॉल एंड द इंटरेस्ट रेट इज वीक. ठीक है, तो ये दोनों में कोई रिलेशन ऐसा नहीं है. ठीक है, एंड मेनी टूल्स आर अवेलेबल टू रिड्यूस एक्सेस वोलेटिलिटी. अब मेनी टूल्स कौन कौन से हो सकते हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशंस यू कैन डू, और व्हाट यू कैन डू, कल एक क्वेश्चन था फॉरेन एक्सचेंज स्वैप्स. You can do that also, and you can create a artificial demand or supply of rupee to control the depreciation or appreciation. Okay, so only increasing interest rate should not be the ideal, should can be ideal, but should not be the only practical option that is left with RBI. Okay, also our current account deficit has reduced and its financing no longer is an issue for India. ठीक है, बिकॉज करंट अकाउंट डेफिसिट कम होना चाहिए ना, नहीं तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज कम होता जाएगा. और वैसे भी $100 बिलियन कम हो गया ड्यू टू अप्रिसिएशन ऑफ डॉलर. इट विल आल्सो अगेन स्टार्ट टू रिड्यूस. तो वो रिड्यूस नहीं हो रहा है क्योंकि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट अब कंट्रोल में 2.2% के आसपास. ओके, नाउ डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा. So inflation continues to be the biggest risk in the to the economic outlook. Yes, sir. Governor Shaktikant Das. Overall situation remains dynamic, fast and evolving. Clarity on monsoon will be available in the coming months. Okay. Many are predicting for El Nino. El Nino means low productivity agriculture year because there will be low rains. So in a month or two, we will see whether what is the effect of El Nino, if there is an effect of El Nino or not. Generally, when El Nino occurs, that is followed by a drought year. Okay. Milk prices may remain firm in the lean summer due to tight demand supply balance and higher fodder cost. So input cost is high, that's why milk prices will remain high. And rising uncertainty in international crude oil prices also warrants for close monitoring. क्योंकि ideally $85 per barrel is the benchmark for this year. ठीक है, benchmark है this year to calculate inflation. इससे ऊपर नीचे होगा तो गड़बड़ होगा, because we have seen अब ये सप्लाई कम की है OPEC प्लस कंट्रीज ने. सो अराउंड $105 पर बैरल तक ये अमाउंट जाने की संभावना है. ठीक, so that's why they will have to keep a watch, because हम 80% of our oil is imported. ठीक है, 80% of the oil we import. तो एक तरह से इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन हो जाएगा इंडिया के लिए. इवन दो डोमेस्टिक प्राइसेस उतने नहीं बढ़ेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे हम उतना इन्फ्लेशन. एंड सिंस imported crude oil will be of higher price, that will cause higher logistics cost, that will cause higher food prices in the market. ठीक है, तो उस पर कंट्रोल करना जरूरी है. ओके ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. ये वाला जो लास्ट वाला सेगमेंट था, यू कैन यूज दिस इंफॉर्मेशन टू राइट आंसर्स एंड दैट्स ऑल यू कैन डू विथ इट. ठीक है, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते इसका.
बिकॉज इन कमिंग 2 मंथ्स कब है ये इसका एग्जाम? जुलाई, जुलाई में है ना, 2 जुलाई के आसपास बताया गया ना इसका एग्जाम। Monthly bulletin, Shreya, is not very necessary, but I will cover it tomorrow. No, not tomorrow because tomorrow will be revision. I will cover it day after tomorrow. ठीक है श्रेया, I will cover it, but don't put too much effort in it. ठीक है, लो एफर्ट कंटेंट है वो, तो डोंट पुट टू मच एफर्ट। कुछ कुछ डेटा होता है जो हो सकता है कि एक नंबर में पूछ दे, दैट्स ऑल यू हैव टू रिमेम्बर, उससे ज्यादा कुछ नहीं। एमपीसी कैन बी इम्पोर्टेंट, जो भी जुलाई जुलाई में होगा, अभी अप्रैल मई जून में होगा एमपीसी दूसरा। ठीक है, तो जून वाला एमपीसी विल बी इम्पोर्टेंट फॉर यू बिकॉज द एग्जाम विल बी इन जुलाई इफ द एग्जाम हैपन। शेयर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, 2 महीने का देख लो काफी है, 2 मंथ्स 3 मंथ्स, मोर देन इनफ, 2-3 मंथ्स। बेसिकली इसमें स्टेट ऑफ द इकोनॉमी आता है और कोई ना कोई एक दो रिपोर्ट लिखी रही होती है आरबीआई, वो आता है। इवन व्हेन यू रीड दैट मंथली बुलेटिन, उसके नीचे वो लिखा रहता है कि दिस इज नॉट द व्यू ऑफ आरबीआई, दिस इज द व्यू ऑफ ऑथर्स। तो अब ये ऑथर्स का अगर व्यू है, आरबीआई का व्यू नहीं है, तो आरबीआई इज नॉट गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चंस फ्रॉम दैट। तो दैट्स व्हाई बी कॉन्फिडेंट दैट उस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाले वहां से। तो ओके, just chill about the monthly bulletin. So let's do MCQs. Then we will discuss one more thing. वो फरमाइश तो है ना, आपकी फरमाइश और वो है। Okay. So let's do MCQs. Number one. Question number one. What are the proposed rules by the Ministry of Electronics and Information Technology regarding Aadhaar authentication by private entities? Okay, one answer, two, three answers. ठीक है, सही जवाब सबका। C is the right answer. Private entities are allowed to carry out Aadhaar authentication for good governance purpose with approval from central government. Now this is a proposed rule change. Proposed है अभी, ठीक है, जब हो जाएगा तब देखेंगे। रेणु, you are also right. Aniket, Isha, Shreya, Renu, Gaurav, everyone is right. Let's move to another question. Okay, what is the latest finding on job creation in India according to the EPFO? Let me give you a hint. There is a decrease month on month. Okay, Aniket, Isha, Gaurav, Renu, everyone is right. B is the right answer. Fresh formal job creation has declined. ठीक है, declined for third straight month to a 21-month low. ठीक है, और decline to 7,38,000, मतलब decline हुआ है 10% का. This statement is reversed actually. Now question number 3. According to the RBI data, what was the year-on-year growth rate of banking systems credit in the fortnight ended April 7? अच्छा, जब बाद में पढ़ना है इसको रिवीजन के टाइम, डू नॉट रिमेम्बर ऑल दीज डेटा, नॉट इम्पोर्टेंट। जुलाई में क्या होने वाला है उसके अप्रैल के क्रेडिट ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है। जस्ट रिमेम्बर कि ट्रेंड क्या चल रहा है, क्रेडिट रेट इज ग्रोइंग डिस्पाइट हायर इंटरेस्ट रेट्स। ओके ओके, श्रेया बनर्जी राइट फॉर द लास्ट क्वेश्चन। अनिकेत, रेणु, ईशा, यस करेक्ट। सी इज द राइट आंसर, 15.7%, करेक्ट। करेक्ट गौरव। Okay, now question number 4. What is the framework issued by the NSE?
ओके राइट, ईशा, निकेत, रेणु, श्रेया, गौरव, सही जवाब इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 5, which country emerged as the largest crude oil exporter to India by value in February, not overall? But tell me which will be overall for financial year 23 from April to Feb. Which country is the top? Yes, इस क्वेश्चन के लिए सही है, सी इज द राइट आंसर। ईशा, निकेत, रेणु, श्रेया, करेक्ट। करेक्ट ईशा, निकेत। Now this country is Iraq. जवाब करेक्ट ईशा, करेक्ट अनिकेत, रेणु, सही जवाब। ओके, नाउ एमसीक्यू खत्म हो गया। अब ये एक फरमाइश वाला, नाउ दिस वाज आस्क्ड बाय समवन ऑन टेलीग्राम, दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग इट फॉर विथ एवरीवन। और ये कहानी आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स, बट स्टिल आई विल अगेन डू दिस, so just listen to it carefully and try to use it when you write answers. So this was the news, ठीक है, कहीं आई थी शायद ये उसमें बिजनेस स्टैंडर्ड में। So this is finding alternative paths to buy oil from states under Western sanctions. ठीक है, stretching the government and RBI's creativity. So everyone knows about one term, that is, पढ़ लेना है इसको if you have time, but I am just telling the story now. Just listen to it. कैसे बहुत कुछ लिखा होगा। India is trying hard for internationalization of rupees. ठीक है, हमने अपने स्पेशल बोस्त्रो अकाउंट खोले हैं 3 कंट्रीज के साथ। एक तो रशिया है, 17 बैंक हैं उसके, मतलब 17 स्पेशल बोस्त्रो अकाउंट। देन देयर इज श्रीलंका एंड देयर इज मॉरिशस। ठीक है, तो ये 3 कंट्रीज है हमारे। नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम, श्रीलंका इज ओके विथ यूजिंग इंडियन रुपीज। श्रीलंका इज ओके विथ यूजिंग इंडियन रुपीज बिकॉज उनकी करेंसी बहुत ज्यादा डिप्रिशिएट हो चुकी है, देयर करेंसी इज वेरी वोलेटाइल, and also India is in surplus with regards to trade with Sri Lanka. So they are okay to use India's rupee as a standard for their for building their own foreign exchange, because India का rupee जो भी है is more stable than the Sri Lankan rupee. So they are using it. ठीक है, so Indian rupee is being used by the Sri Lankan central bank for as foreign exchange. ठीक है, अपना फॉरेन एक्सचेंज भर रहे हैं बिकॉज इंडियन रुपीज मच मोर स्टेबल देन द श्रीलंकन रुपया। पॉइंट नंबर 1। बट ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। आवर प्रॉब्लम इज रशिया। नाउ व्हाई आवर प्रॉब्लम इज रशिया? बिकॉज वी आर बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया एट $60 अ बैरल। ठीक है, 50 के आसपास खरीद रहे हैं। नाउ इंडिया wants to pay Russia in rupee. अब ये पे करने के लिए we have done everything. We have let them open special boostro account, etc. But Russia does not want to accept this rupee. Why? Because Russia has a trade surplus with India. ठीक है, Russia has a trade surplus with India. Russia is saying, if we will accept Indian rupee, then where will we use this Indian rupee? Point number 1. Point number 2, Russia has increased its foreign exchange even though there are multiple sanctions on Russia. ठीक है, रशिया के ऊपर बहुत सैंक्शन होंगे, हैं भी, but still Russia has managed to keep their foreign exchange high. ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज की कोई कमी नहीं है रशिया के पास। रशिया इज सजेस्टिंग let us do trade in yuan. Russia is suggesting let us do trade in yuan. India is saying no. क्यों? Because we are already in a around $100 billion trade deficit with China. अगर हम युआन को एक्सेप्ट करने लगेंगे, वी आर इंक्रीजिंग द डिमांड ऑफ युआन,
द युआन, अगेन युआन का प्राइस क्या होगा, अप्रिशिएट हो जाएगा मार्केट में. If the yuan price appreciates in the market, what it will cause that our importers will now have to pay higher price to import from China. अब चाइना से इंपोर्ट करने के लिए हायर प्राइस देना होगा. देन आवर ट्रेड डेफिसिट विद चाइना विल ऑल्सो इंक्रीज इन द फ्यूचर. ठीक है, क्योंकि हम वी आर सीवियरली डिपेंडेंट अपॉन चाइना फॉर आवर मल्टीपल थिंग्स. इवन फॉर अ सिंपल सोलर पैनल वी आर डिपेंडेंट अपॉन चाइना. बैटरी तो खैर बात की बात है, वो तो है ही, दुनिया भर उस पर डिपेंडेंट है. तो वी डू नॉट वांट टू यूज युआन. सो हाउ दिस $60 वाज वर्किंग, क्योंकि रशिया इंडियन रुपीज ले नहीं रहा है, इंडिया युआन में ट्रेड कर नहीं रहा है, तो ये चल कैसे रहा था ये ट्रेड. तो दिस ट्रेड वाज हैपनिंग बिकॉज wait. Okay. So what was happening was, this is Russia. इसी पे वापस आ जाते हैं. Okay. Now listen, what was happening, that India was paying Russia in रियाल. रियाल is a currency of UAE. UAE की करेंसी है रियाल. So India was paying Russia in रियाल. ठीक है. But now since OPEC Plus has lowered down the supply, अब ये $60 वाला बैरल जो हम खरीद पा रहे थे, we will not be able to do this trade. Further, UAE has said, if this $60 per barrel limit is crossed for doing trade with रशिया, अगर ये $60 पर बैरल क्रॉस करता है रशिया से import for importing of crude oil, we will not allow from our banks, we will not allow to use our foreign currency to purchase oil from Russia. That is not allowed by the western countries. ये यूएई ने कह दिया साफ. तो युआन में हमें करना नहीं है, रशिया कर नहीं रहा है रुपी में, और यूएई ने कह दिया है कि वी विल नॉट अलाउ रियाल टू बी traded for Russian oil if it crosses the $60 per barrel limit, जो कि करने वाला है. ठीक है. तो नाउ व्हाट वी, ठीक है, तो अभी बहुत बड़ा धर्म संकट में घूम रहे हैं अभी हम लोग. सो व्हाट the government and RBI is going to do, or what they want to do is, they want to increase the Indian rupee, internationalize the Indian rupee. तो अब हम रशिया से अगर नहीं खरीद पा रहे हैं, so there is a second state that is in under the US sanction, और उस स्टेट का नाम है ईरान. ठीक है. दैट स्टेट नेम इज ईरान. ईरान हैज अलाउड टू यूज इंडिया एज अ फॉरेन एक्सचेंज. ठीक है. ईरान हैज recognized Indian rupee as a valid foreign exchange. So Indian importers can now trade with Iran in Indian rupees. ठीक है. Indian importers can now trade, and exporters also can trade with Iran in Indian rupee. Point number 2 is, since we were not importing much from Iran, क्योंकि हम ऑयल नहीं खरीद पा रहे थे ईरान से, we were in trade surplus, around a trade balance with Iran. ईरान ने कहा ओके, we will take payment in rupees and we will get give your rupee back when we are trading with you. कि अगर हम इंडिया से कुछ इंपोर्ट करेंगे तो रुपये में पेमेंट कर देंगे, अगर इंडिया को कुछ एक्सपोर्ट करेगा ईरान तो वो रुपये में पेमेंट ले लेगा. प्लस सिंस इंडिया इज अ पार्टनर इन चाबार पोर्ट में इंडिया पार्टनर है. यस, चाबार पोर्ट पे जो इंडिया पार्टनर है. ठीक है. सो ईरान हैज सेड दैट ईरान विल आल्सो पे द सैलरीज ऑफ द वर्कर्स इन इंडियन रूपी. तो भाई इंडिया का काम सेफ है. इंडिया का काम ये सेफ है कि दैट वी कैन यूज इंडियन रुपीज विद ईरान इफ नॉट विद रशिया, बिकॉज ईरान इज ऑल्सो अंडर सैंक्शन. अब दूसरी बात यह है कि इंडिया में सिर्फ एक ही बैंक ऐसा है, ओनली वन बैंक इज देयर इन इंडिया
which does not have any business with US, और उस बैंक का नाम है यूको बैंक. So if you want to do trade with Iran, you will have to open an account, special Vostro account in UCO bank. और किसी बैंक में अगर अकाउंट खुलवाओगे, then US will know that you are doing trade with Iran, and then the sanction will be put upon the bank. तो इंडिया का कोई बैंक ईरान से ट्रेड करना चाहता नहीं है, ठीक है. ओनली यूको बैंक इज द बैंक, ठीक है. लेट मी मेक यू रीड दैट ऑल्सो. यस, हियर ओनली यूको बैंक इज द बैंक, ठीक है, कोलकाता बेस्ड यूको बैंक दैट डज नॉट डील विथ यूएस. अब यूएस के साथ डील नहीं कर रहा है, देन यूएस विल नॉट नो व्हाट वी आर ट्रेडिंग विथ ईरान, ठीक है. यूएस का सैंक्शन तब लगेगा किसी बैंक में जब वो वहां से ट्रेड कर रहा होगा, यूएस की किसी कंपनी से कर रहा होगा, यूएस की किसी कंसल्टेंसी से कर रहा होगा. यूको बैंक हैज नो बिजनेस विद यूएस और एनी वेस्टर्न पावर. सो ईरान एंड इंडियन एक्सपोर्टर्स एंड Iranian exporters can leverage that advantage with UCO bank. But there is another problem, that many of the companies that trade in oil and gas have an account with banks that are linked with US, ठीक है, that are linked with US. That is another problem. अगर उस मान लो यूको बैंक से भी पैसा हमने ट्रांसफर किया, तो बाद में घूम फिर के पैसा तो उन्हीं, जैसे मान लो कि आईओसी का अकाउंट है, वो बैंक ऑफ बड़ौदा में है. इवन इफ वी आर इंपोर्टिंग विद द यूज ऑफ स्पेशल वोस्त्रो अकाउंट इन यूको बैंक, देन ऑल्सो घूम फिर के वो पैसा जाएगा कहाँ, बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट में. सो यूएस विल नो. सो देयर आर मल्टीपल इश्यूज that are going on with internationalization of rupees, but this is our best bet. Iran will be our best bet in case the crude oil price rises. तो ये पूरा आर्टिकल यही घूम फिर के बता रहा है. Since Russia is not available with for rupee payment, UAE has said अगर $60 per barrel पार हुआ, we will not allow India to trade with Russia in real. India does not want to trade in yuan because we are in a higher trade deficit with China. ठीक है, युआन का प्राइस अगर अप्रिशिएट करेगा तो ट्रेड डेफिसिट और बढ़ जाएगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है. ओनली ईरान इज लेफ्ट जिसके ऊपर सैंक्शन लगे हुए हैं, बट विथ ईरान ओनली वन बैंक इज अलाउड इन इंडिया, ओनली वन बैंक इज अवेलेबल दैट विल डू ट्रेड विथ ईरान विदाउट एनी खतरा ऑफ सैंक्शन विथ यूएस, क्योंकि बाकी सारे बैंक यूएस के किसी ना किसी कंपनी के साथ ट्रेड करते हैं, ठीक है. नहीं तो सैंक्शन लग जाएगा. दे कैन नॉट यूज स्विफ्ट मैकेनिज्म और एनी अदर फाइनेंशियल मैकेनिज्म. तो सिर्फ यूएस से ही खराब नहीं होगा, यूरोपियन यूनियन के साथ खराब हो जाएगा, ठीक है. दैट्स वाई यूको बैन. सो ओनली ईरान. इस पूरे आर्टिकल में यह है कि ईरान हैज सेड दैट वी विल यूज इंडियन रूपी एज फॉरेन एक्सचेंज, जस्ट एज श्रीलंका इज यूजिंग, बिकॉज ईरान के पास भी फॉरेन एक्सचेंज का इशू है, डॉलर वहां आते नहीं है. इंडियन रूपी इज मच मोर स्टेबल देन ईरानियन दिनार, ठीक है. तो ईरान हैज सेड कि ठीक है, हम अभी आर रेडी to do trade in rupee, and also we will pay the workers working in Chabad port in rupee, and we will also pay for imports that we are doing with India in rupees. So Iran is our best bet, ठीक है. Sorry, Iranian riyal, not dinar, Iranian riyal. So घूम फिर के कहानी यही है कि बहुत जगह से प्रॉब्लम हो गई है, और since our crude oil price is going to rise, so we have no other option than to do क्रूड ऑयल ट्रेड विद ईरान. तो अभी तक जो पिछले 4 महीने से हम लोग पढ़ रहे थे कि रशियन इंपोर्ट्स ऑफ क्रूड ऑयल इज द हाईएस्ट, देन अब धीरे धीरे वो शिफ्ट हो जाएगा ईरान की तरफ, इफ दैट रूपी ट्रेड इज अलाउड. नो अनिकेत, नो नो, इंडिया विल नॉट. रशिया कह रहा है कि उसको सिर्फ युआन में पैसे चाहिए या डॉलर में चाहिए. उस ईरान से क्या लेना देना है उसको. ईरान के साथ तो वैसे भी किसी का ट्रेड नहीं होता, सैंक्शन लगा हुआ है फ्रॉम ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन. ओबामा जो साइन करके गए थे ट्रीटी, वो सब डंप हो गया, ठीक है. ट्रम्प हैज द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन पुट सैंक्शन ऑन ईरान. तो ईरान के रुपए की रियाल की वैल्यू तो वैसे भी कुछ नहीं है. what I am saying is, since trade with Russia for oil will not be possible if the oil price breaches the $60 per barrel limit, unless until India allows to with India approves trade with Russia in yuan. जब युआन मतलब चाइनीज करेंसी, अगर चाइनीज करेंसी में ट्रेड के लिए इंडिया मान जाता है कि ठीक है, आई विल परचेज ऑयल फ्रॉम रशिया इन युआन, देन वेल एंड गुड. बट इंडिया वो करना नहीं चाहता है, रशिया रुपया लेना नहीं चाहता है.
डॉलर में ट्रेड कर नहीं सकते, और यूएई की करेंसी में ट्रेड कर रहे थे रशिया से, यूएई वो करने नहीं देगा $60 पर बैरल होने पे। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है कि जो भी रुपए में ट्रेड करेगा इंडिया से, हम उससे तेल खरीदेंगे। ठीक है, जो भी रुपए में ट्रेड करेगा उससे तेल खरीदेंगे। तेल कहाँ से मिलेगा? ईरान से। ईरान पे है सैंक्शन। ईरान ने कह दिया कि ठीक है, आई विल यूज रूपी एज अ लीगल करेंसी, लीगल फॉरेन एक्सचेंज। दुनिया में रुपए, इन द वर्ल्ड ओनली 2% ऑफ ट्रेड इज डन इन रुपीज, सिर्फ 2%। डॉलर इज इंटरनेशनल करेंसी। युआन इज ऑल्सो, एसडीआर का नाम सुने होंगे, एसडीआर। एसडीआर में 5 करेंसी है: डॉलर, युआन, जापानीज येन, यूके पाउंड एंड यूरो। ठीक है, ये 5 के करेंसी ग्लोबल करेंसीज है। इंडियन करेंसी इज नॉट अ ग्लोबल करेंसी। इवन अगर कोई इंडियन करेंसी में ट्रेड करेगा तो उसको बेचेगा कहाँ? उस पैसे को यूज कहाँ करेगा रुपए? ओनली ईरान इज अलाउइंग इट। सो वी विल हैव टू ट्रेड विद ईरान। ईरान से तेल खरीदना हो। यही है इसका कहानी। बिकॉज देर आर सैंक्शन ऑन रशिया। रशिया के ऊपर सैंक्शन है। $60 पर बैरल के ऊपर अगर ऑयल बेचेगा रशिया, देन इंडिया कैन नॉट परचेज इट। सैंक्शन लग जाएंगे इंडिया के बैंक्स के ऊपर। इंडिया, क्योंकि रशिया से ट्रेड करने को वेस्टर्न पावर्स ने सैंक्शन लगाया हुआ है। अगर डॉलर में ट्रेड करेंगे रशिया, और यूएस को पता चलेगा ये अगर डॉलर में ट्रेड करेंगे, सो विच एवर बैंक विल बी अ ट्रांसफर पार्टी इन दिस ट्रांजैक्शन विल फेस सैंक्शन फ्रॉम यूएस एंड द वेस्ट। फाइनेंशियल सिस्टम से कट ऑफ हो जाएगी इंडियन बैंकिंग सिस्टम। डू यू वांट इट? नो, यू डोंट वांट इट। तो हमें तो कुछ ना कुछ देखना है जुगाड़। जुगाड़ कहाँ मिल रहा है? ईरान में मिल रहा है। तो जो काम अभी तक हम लोग रशिया के साथ कर रहे थे, वो ऑयल प्राइस बढ़ने के बाद, अगर हम नहीं माने युआन में और रशिया नहीं माना रुपी में, तो वी विल हैव टू डू द ट्रेड विद ईरान। यही है कहानी। ठीक है, आई होप ये कहानी सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, सो यू कैन यूज दिस स्टोरी एंड द कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। अप्रिसिएशन ऑफ युआन क्यों होगा? बिकॉज द डिमांड फॉर युआन विल राइज। ठीक है, वाई वी कांट ट्रेड इन रुपी? बिकॉज देर इज नो डिमांड ऑफ रुपी। 2% ही ट्रेड होता है इंडियन रुपी में। ठीक है, वो भी क्यों हो रहा है? क्योंकि हम, हमारा रेमिटेंसेस इतना इधर उधर घूमता रहता है, लोग आते जाते हैं, इसलिए 2% है। हम ट्रेड नहीं कर रहे हैं 2% का, हम पैसे भेज रहे हैं इधर उधर रुपीज में। दैट्स वाई दैट 2% इज देयर। ठीक है, यूएई मना कर देगा, डॉलर में कर नहीं सकते, बचा कौन? ईरान। ठीक है, ईरान हैज अलाउड दैट वी विल यूज इंडियन रुपी एज अ फॉरेन एक्सचेंज करेंसी। ओके, सो दिस इज द होल स्टोरी एंड इंडिया इज इन द मिडल ऑफ इट। और बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, क्योंकि अगर ये टैकल नहीं हुई, देन वी विल हैव टू बाय क्रूड ऑयल एट 105 $110 पर बैरल। तो अभी जो ₹100 का पेट्रोल, 96 रुपीज का पेट्रोल है, फिर और आगे चला जाएगा, बिकॉज द गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू डिक्रीज एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, इतना कम हुआ क्रूड ऑयल प्राइस, द इंडियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट डिड नॉट बज्ड। ठीक है, 1 रुपया भी कम नहीं हुआ तेल का दाम। तो जैसे ही बढ़ेगा तेल का दाम, तो या यू कैन सी दैट द ऑयल प्राइस विल राइज एंड इट विल कॉज अ इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। तो उसको भी कंट्रोल करना है। तो 4-5 कॉन्सेप्ट इस पूरी थ्योरी में लगे हैं। जस्ट गो थ्रू दिस एंड पे अटेंशन। easy concepts हैं, but just go through it once. Okay, I hope you have understood it. And that's it for today. I hope you like the lecture. अगर आज के लेक्चर से आपके नॉलेज में वैल्यू एड हुआ है तो डू लाइक एंड शेयर। मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे। एंड इसके बाद भी इफ यू हैव एनी इश्यूज यू कैन रीच आउट टू मी ऑन टेलीग्राम, इट्स अवेलेबल। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।